We talked about the Septuagint, the translation of the Old Testament into Greek. We talked about the Vulgate, which is the translation of the whole Bible into Latin because it was written in 300 or 400 AD. The exam you're going to take on this course has a question about a guy named Wycliffe, which I want to give you so that you're prepared for it for the exam. So I'm going to share my screen now. तो पिछली दफा हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस जो है की गई, सेप्टुएजिंट किया गया, वॉलगेट की गई, ठीक है। तो अब हमारी जो एग्जाम्स है उसके अंदर जो है एक क्वेश्चन है आज जो है वो विक्लिफ के बारे में, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। So that is a person's name. That's his last name. और ये उस शख्स का आखिरी नाम है, विक्लिफ जो है। And this course was originally designed for English speakers. And so it has this question. Wycliffe translated the Bible into English for the first time. कोर्स जो है क्योंकि ये इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बना है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर शामिल किया गया कि इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ से आई। तो एक शख्स था जिसका नाम विक्लिफ था, उसने सबसे पहले जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन को किया। It's actually going to look like this. Wycliffe, and you got to pick which one it is. And he made the first complete translation of the English Bible. It should be into English, but that's the idea. Now, it also talks about the Dead Sea Scrolls, which we talked about. I showed some pictures of the Dead Sea Scrolls. उसके बाद हमने डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में जो है वो क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़ लिया, सीख लिया। And remember, does everybody remember where the Dead Sea is? आप सबको पता है कि जो डेड सी है वो कहाँ पर है? आपको याद है कि एक नक्शा आपको दिखाया गया था और आपको पता था कि जो है जिसको नमक का समंदर या डेड सी कहते हैं। There's the Dead Sea. Right here. This is the map of Israel. You remember Dan, Sea of Galilee, the Jezreel Valley with Megiddo right there, the Jordan River, the Dead Sea, Jerusalem here, Beersheba here, the Negev. This is Israel. The Dead Sea Scrolls were discovered in caves up in here. And that was just 80 years ago. A young shepherd, Arab shepherd, was wandering around and one of his sheep went missing. And so he started throwing rocks into the caves up on these hills so he wouldn't have to climb the mountains. And he threw a rock into a cave and he heard something shatter. And he climbed up and he found a broken pot. And in the pot were old manuscripts. And this is the beginning of the discovery of the Dead Sea Scrolls. और ये जो हमने जो है डेड सी स्क्रॉल्स के मुताबिक पढ़ा, बाकी सारा नक्शा जो है आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो डेड सी स्क्रॉल्स हैं जहाँ पर आपको रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो इस एरिया के अंदर जो है आगे एक जो था वो बदून जो था चरवाहा था, अपनी बकरियां इस इलाके में चरा था, उसकी एक बकरी जो है वो गुम गई और उसने ऊपर जो गार थी उसने समझा कि वहां पे चले गई और उसने गार के अंदर पत्थर फेंकना शुरू किए ताकि उसको ऊपर जो है वो पहाड़ी के ऊपर न चढ़ना पड़े। वहां पर एक जो उसका पत्थर जो है वो अंदर किसी चीज से लगा
तो उसको कुछ टूटने की आवाज आई, तो उसने ऊपर जाकर देखा तो एक मटके थे और मटकों के अंदर जो है वो सहीफे पड़े हुए थे। तो वहां से ये 1947 के अंदर जो है पता लगा, और तकरीबन 40 साल तक ये अवाम तक नहीं आए। इसके ऊपर रिसर्च की गई और उसके बाद जो है ये कांच जो है वो जो मौजूद है, और आज भी जो है उस इलाके के अंदर जो है नई डिस्कवरीज जो है वो होती है। So here's some pictures of where it was found. That's the Dead Sea in the background, showing you it's very close to the Dead Sea. और ये जो है वो तस्वीर है, पीछे आप देख रहे हैं कि डेड सी है, और ये जो इलाका सामने जो नजर आ रहा है इसके This is अंदर वो गार थी। यहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी रहती थी जो कुमरान जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्क्रोल्स मिले। so this is actual site of Qumran. The scrolls were discovered up in the mountains. So this picture, the guy taking this picture is standing on the ancient site of Qumran, and he's taking a photograph towards the hills. And that hole, that cave, is where that was the fourth cave discovered. And in that cave, they discovered a lot of scrolls. So the scrolls were hidden up in caves in the mountains. और ये नीचे जो थी, ये हमने ग्रुप पहले शायद पढ़ा था, जो असीन्स का ग्रुप था, वो जो है कुमरान की उन्होंने पूरी जो है वो वादी के अंदर यहाँ पर उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई थी। और यहाँ पर जो है हम इसका मतलब पूरा कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाइबल के जो है मुख्तलिफ जो हिस्से थे नए पुराने यादनामे में, उनकी कॉपीज को करते थे। लेकिन जब जो है रोमियो ने हमला किया, जब यहूदियों की जंग हुई, तो उनको मारना था हर सूरत। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन तमाम शब्दों को जो उन्होंने उनको कॉपी किया हुआ था, हजारों हैं ये, उन्होंने इनको इस गारों के अंदर जो है मुस्लिम है 13 गारें हैं जो अभी तक मिली हैं उसके अंदर छुपा दिया। और ये एक गार की तस्वीर है, तो इन गारों के अंदर छुपा दिया। उसके बाद जो है रोमियो ने उस पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया, और 1947 तक किसी को नहीं था पता कि यहाँ पर पुराने ऐदनामे के मसवदे मौजूद हैं। फिर उस जो बदून था उसने, जब ये मटके हैं जिसके अंदर जो इनको जो है वो सेव किया गया था, तो उस बदून ने जब पत्थर मारा तो उसको आवाज आई, तो उसने ये पहली दफा पता लगा कि यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। So this was a pot in which some scrolls were hidden. And it was a pot just like this that broke when the little shepherd boy threw a rock up into the cave. It hit this and broke the pot. And that's what made him run up the mountain and look inside. And he found the scrolls and then went and told his tribal leaders. And that's how these scrolls were discovered. और ये देखें, आपको मटके हैं, ये तकरीबन 3-3.5 फुट का मटका होता था, उसके अंदर जो है इनको सेव किया गया। और जब इसने जो है ये पहली दफा देखे तो उसने जाके बाकी लोगों को बताया। And remember, the Dead Sea Scrolls, because we talked about several things. We talked about the Masoretic text. And I explained that a Masorete is a scribe. And so the Masoretic text is the text of the Old Testament written according to the scribal traditions of the Masoretes. और जो मैसोरेटिक जो टेक्स्ट जो है हमने देखा था, और ये इसका मतलब जो है वो ये है कि एक स्क्राइब है जो लिखने वाला है, उसका नाम। सो दिस इज लाइक अ ग्रुप ऑफ, लाइक अ फैमिली नेम, और इट्स अ Not a पर्सन। family name, it's a job title. ओके, तो ये जो है एक जो मैजरिट्स जो थे, ये जो थे स्क्राइब्स थे, ये उनका जो जॉब का जो टाइटल है, ठीक है ना।
उनको जो है वो माइसरीट्स उनको कहते थे, उन्होंने जो है पुराने ऐहदनामे को जो है वो सारा लिखा। So the word Masoret comes from the word Masorah, which means tradition. So it means professional scribes who were all trained in the same way and had a certain way of when they copied a manuscript of making sure the manuscript was copied correctly. और ये जो मसूरा है, ये जब पूरे कॉपी करते थे जो है, जैसे अभी तो हमारे पास कॉपी मशीन है, पहले जो है वो पुरानी किसी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी को देख के जो है लिखा जाता था। तो ये जो स्क्राइब्स थे, ये इसको, जैसे आपको शायद आप इस दौर के नहीं है, लेकिन पुराने दौर के अंदर जो है वो कलम होती थी, दुआत होती थी, उसके अंदर डुबो के स्याही बनाई जाती थी और वो स्याही से लिखते थे। तो सेम जो ये लिखते थे, तो ये प्रोफेशनल्स होते थे लिखने वाले। तो ये स्क्राइब जो हैं, ये प्रोफेशनली जो है इन्होंने पुराने ऐहदनामे को लिखा। और हमने ये पढ़ा था कि ये तकरीबन जो है इन्होंने 600 से लेकर 1000 जो है वो मसीह के बाद इन्होंने काम किया। So they worked from 600 to 1000 AD. That just happens to be the same time as early Islam when they were doing their work. And what we know is that being a scribe, whether you were a Muslim scribe, a Christian scribe, or a Jewish scribe, they were friendly with each other. Unlike the religious leaders, the scribes talked and they shared ideas and they helped each other come up with better ways of doing things. और ये जो स्क्राइब्स होते थे, ये इस तरीके से इनको जो है वो ट्रेन किया जाता था, चाहे वो मसीही हो या इस्लामिक हो या जो है वो यहूदी हो। तो ये अपनी जो टेक्निक्स होती थी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते थे ताकि जो है उनकी लिखाई को बेहतर जो है किया जाए। और वो जैसे जो जो मजहबी लीडर्स थे इन तीनों जमातों के, उनके अंदर तो इख्तलाफात थे, लेकिन जो स्क्राइब्स थे वो लाजमी तौर पर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। Okay, do you get this? Yeah. About the Dead Sea Scrolls? और जो डेड सी स्क्रोल्स जो हैं, वो हमें, जैसे आप याद रखें कि जैसे जिस वक्त पाकिस्तान बना उसी साल के अंदर डेड सी स्क्रोल्स मिले। और ये जो स्क्रोल्स हैं, इनको जब इनकी जो डेट को चेक किया गया कि ये कितने पुराने लिखे गए हैं, तो ये तकरीबन मसीह से 100 साल पुराने भी हैं इसके अंदर। Yeah, remember I gave you this information last week. This is all about the Septuagint, and it's called that because it's 70, and the Vulgate was done in 400 AD. So it's 600 years younger than the Septuagint. It's the Old and the New. This is my notes from last week. So hopefully you have that written down. और आप इस नोट्स को लाजमी लिखते होंगे। तो पिछली दफा मैंने बताया था कि देखें कि जो सेप्टुएजेंट है और जो वॉलगेट है, इसके अंदर तकरीबन आप देखें कि 600 साल का फर्क है। कि जो सेप्टुएजेंट है वो तकरीबन मसीह से 180 साल पहले जो है, या 200 साल पहले, लेकिन जो वॉलगेट है, जो लैटिन के अंदर पुराने ऐहदनामे का तर्जुमा किया गया, वो तकरीबन मसीह से 400 साल बाद, यानी कि टोटल तकरीबन 600 साल का फर्क है। लेकिन जो दोनों चीजें हैं उसके अंदर जो है वो बिल्कुल फर्क नहीं है, दोनों जो टेक्स्ट हैं वो सेम है। Okay, so I was just kind of reviewing because I wanted to cover the Dead Sea Scrolls and the discovery, because I showed you pictures last week of the Dead Sea Scrolls. और ये मैंने क्यों रिपीट किया, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक आपके जो है फाइनल के अंदर एग्जाम के अंदर ये सवाल आएगा,
और आपको याद है पिछली मरतबा भी इसके बारे में बताया गया था, और मैंने आपको डेड सी स्क्रॉल्स की जो है वो पिक्चर्स दिखाई थी। इशाया जो है उसका 36 बाब दिखाया गया था, ये इशाया का पहला बाब है शायद। This is a picture of the scroll of Isaiah. That thing, you can see it's rolled up over here. That thing was rolled up and put in that jar that I showed you a picture of. और ये जो देखें जो स्क्रोल्स होते थे वो इस तरीके से होते थे कि इनको जो है जैसे कपड़े के थान नहीं होते जिनको हम ऐसे रोल करके रखते हैं, तो इसी तरीके से इनको लिख के जो है इसको रोल किया जाता था, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मटकों के अंदर जो है इसको सेव किया जाता था। तो डॉक्टर डॉक्टर वैंस, डू यू नो लाइक द मैक्सिमम लेंथ वी फाउंड सो फार ऑफ अ स्क्रॉल? How long a scroll was? या The Isaiah scroll is the longest one we found. And I think that's about 60 feet. But I don't, 60? I really don't remember. How many feet? 60? 60. Yeah, 60. वाह। तो अभी तक जो है हमें जो सबसे जो लंबा स्क्रॉल मिला है वो ये इशाया का है, जो तकरीबन 60 फीट लंबा है। लेकिन ये डॉक्टर वैंस कह रहे हैं, मुझे सही इतना याद नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 60 फीट जो है ये लंबा है। You can see right here, this sheet, this is written on lamb skin. It's called parchment. And this was sewn to the next sheet. Those are stitches. They actually sat down with needle and thread and sewed the two sheets together. और ये जो लिखा हुआ है, ये जो है जो बर्रा जो लैम है, जो भेड़ है, उसकी जो खाल है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और आपने देखा है कि इसको आपस में जो है वो क्या करते थे कि इसको सी देते थे, दो सफों को या दो हिस्सों को आपस में सीते थे। तो इसी तरीके से जो है जैसे आज हमारे पास बुक शेप में है, तो पुराने दौर के अंदर इसको सीते थे और उसके बाद इसको गोल करके बना लेते थे। Remember, these are scrolls, they're not books like we buy today. Books like we buy today were invented by Christian scribes. And it was, that's called a codex, CODEX. And that's back in the time of the Masoretes, but it wasn't Masoretes, which are Jewish scribes. It was Christian scribes, and they invented the codex. But the Dead Sea Scrolls are 1,000 years older, and they were written as scrolls. और ये जो स्क्रोल्स हैं ये पुराने अहदनामे के स्क्रोल्स हैं जो कि जिनको रोल किया जाता था। लेकिन मसीही जो स्क्रोल्स थे वो भी इसी तरह होते थे, लेकिन उसी दौर में जिस दौर में मैजरीट्स जो हैं वो तो यहूदियों के स्क्राइब्स हैं, लेकिन जो मसीही स्क्राइब्स थे उन्होंने जो है एक और शक्ल दी, जो है जो इस तमाम लिखाई को, जिसको हम कॉडेक्स कहते हैं। कॉडेक्स जो है वो ऐसे है कि जैसे यहाँ पर इसको यहाँ पर सिया गया है, लेकिन जो कॉडेक्स के अंदर जैसे किताब नहीं होती एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था और एक साइड से उसको जो है वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तय लगाते थे, तो उसको जो है वो कॉडेक्स कहते हैं। आप लिख सकते हैं कॉडेक्स। तो कॉडेक्स जो थी वो मसीहियों ने सबसे पहले जो है इसको शुरू किया, फिर लंबा स्क्रोल के बजाय कॉडेक्स जो है वो बनाया। Now look on this scroll, you can see the scribe would first take a knife and he would draw a line marking the beginning of a column and the end of a column. He was supposed to write between those two lines. He would also take the knife and draw horizontal lines all the way across the sheet to hang the letters from. Unlike us, we rest our letters on the line. They actually hung it. See the line that he drew and see how the letters are hanging from the line. Right. Top of the letters that line up, not the bottom. और आप देखें कि जो कॉडेक्स ये स्क्रोल्स जो थे इसके अंदर जो स्क्राइब्स होते थे वो क्या करते थे कि चाकू लेके इसके कॉलम्स बनाते थे और उसके बाद इसकी जो लाइनें हैं वो भी चाकू से लगाते थे, लेकिन हम जो हैं वो लाइन के ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये जो थे वो लाइन के नीचे लिखते थे। And in fact, you can see the scroll tends to break
at these lines, because that's not drawn on there. They cut it with a knife. They'd make these lines with a knife, and the scroll was weakened and it would break off. You'll notice that big chunk broke off right at that line. और आपने ये देखा होगा कि जो लाइन जो थी वो चाकू से लगाई जाती थी, तो वहां पर जहां से निशान लगता था तो स्क्रोल्स जो थे वो काफी वीक हो जाते थे, तो अमूमन जो है वो वहां से टूट भी जाते थे। So just to bring the picture back. So that's the whole picture. So the reason why the Dead Sea Scrolls are so important, because before 1947, prior to that, the oldest manuscript we had of the Bible was 1000 AD. It was at the end of the Masoretic era. That was the oldest one. And then all of a sudden, 1947, that little Arab boy discovers these scrolls, and they're 1,000 to 1,200 years earlier. और जो 1947 से पहले जो है हमारे पास जो पुराना अहदनामे था, वो तकरीबन जो था ये मैज़ोरेट्स के दौर में था, जो कि मसीह से 1000 साल बाद की कॉपी थी। तो जब 1947 के अंदर जो है ये डेड सी स्क्रॉल्स मिले, तो हमारे पास अब जो पुराने अहदनामे के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो तकरीबन 2200 साल पुराने हैं। तो एकदम हम देख सकते हैं कि जो है हमें एक ऐसा जो है बहुत ज्यादा किताबें मिली जो कि 1200 साल और मजीद पुरानी थी। All right. Now, the Septuagint was a translation into Greek, as I told you here, translation into Greek. The Hebrew Bible there, it's slightly different than the Hebrew Bible in the Masoretic text. They're different. और हमने जो है ये देखा कि जो सेप्टुएजेंट है वो ग्रीक ट्रांसलेशन है पुराने अहदनामे की, और जो मैज़ोरिक टेक्स्ट है वो अब्रानी के अंदर है। तो इन दोनों के अंदर जो है बहुत एक हल्का सा जो है वो फर्क है, और उसकी वजह हम देखते हैं कि क्या है वो। So for the longest time, the differences between the Septuagint, let me back up for a second. So until 1947, if you had a Hebrew Bible, if you bought one or if you read it in the synagogue, it was a Masoretic text. It was a Hebrew Bible copied by Masoretic scribes and then later typeset by a book publisher. They just took one of the manuscripts and they typeset it to make the printed Bibles. 1947 से पहले अगर आप अब्रानी की बाइबल खरीदते हैं, अब्रानी की बाइबल जो है वो जो पुराने अहदनामे को या यहूदियों की बाइबल को कहते हैं, तो जो अब्रानी की बाइबल अगर आप खरीदते थे तो वो मैज़ोरिक टेक्स्ट होता था। And we knew that the text of the Septuagint, for the vast majority of the text, the Septuagint and the Masoretic text are the same, but there are places where it's different. For example, the book of Jeremiah in the Septuagint is shorter and is in a different order than the book of Jeremiah in the Masoretic text. And your Urdu text or my Hebrew English text, we tend to translate from this. So your copy of Jeremiah is going to be a reflection of this. And when we look at the Septuagint, we just notice that Jeremiah is different. और जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो जरमाया जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी जो तरतीब है, जैसे हमारे पास बाब है तो उसकी जो टेक्स्ट की जो तरतीब है वो मुख्तलिफ है। तो जो हमारे पास जो उर्दू की बाइबल है वो मैज़ोरिक टेक्स्ट से आई है, क्योंकि इसका जो तर्जुमा है 1947 से बाद में पहले किया गया और उसके बाद किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर। लेकिन जो
लेकिन जो हमारे पास जो है 1947 के बाद सेप्टुएजेंट हमें मिली, जो कि 2200 साल पुराना टेक्स्ट था, तो वो हमारे पास उर्दू के अंदर मौजूद नहीं है। So when we looked at Isaiah, that Hebrew text is a Masoretic text. It's the text that those scribes worked on. And it is just typeset manuscript that dates to 1000 AD. It's just that Bible. But then if we compared it to the Septuagint, daggum it. This Bible, the Septuagint, that's a Greek text, and there would be differences. And we just, for the longest time, we just assumed the differences were because of translation. But we knew some books were different. Jeremiah in the Hebrew is very different than Jeremiah in the Greek. And we said, okay, so when the Septuagint, when they did their work down in Alexandria, Egypt, they were looking at a different Hebrew manuscript than what the Masoretes were working on. And it's earlier than the Masoretes. Remember, the Masoretes don't start till then. And Septuagint was then. So that's 800 years earlier. And we just went, okay, well, that's why the Dead Sea Scrolls is so important. Because when they were discovered in 1947, as I've already shown you, we have this manuscript. That's the book of Isaiah. And all of a sudden, that's dating to about 180 BC. That is 1,200 years older than any Hebrew manuscript we have. And we notice that the manuscript, this manuscript that I'm pointing at, agreed with the Masoretic text. Not with the Septuagint, but with the Masoretic text. Mm. And so that told us that the Masoretes, who started work at 600 down to 1,000, 800 years later, they're doing a very good job of making sure that they're copying their manuscripts correctly, because that manuscript that I just showed you looks very much like what this manuscript, what this text looks like. Does that make sense? This looks just like the Dead Sea Scroll, even though this is a copy of a manuscript that's from 1000 AD. Does that make sense, Ken? Yeah, let me explain. And तो आप ये देखें कि जब यशाया की ये जो किताब है, इसके अंदर जो आपको अब्रानी में लिखा हुआ है, जिसको हाईलाइट थोड़ा सा किया हुआ है, ये मैसोरेटिक टेक्स्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो यशाया का जो है वो सेप्टुएजेंट। जब डेड सी स्क्रॉल 1947 के अंदर मिले, तो ये जो हमारे पास जो है पहले 1947 से पहले जो टेक्स्ट था, ये मैसोरेटिक टेक्स्ट जो था, वो उसके बाद जो हमें मिला डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर, जैसे यशाया की किताब मिली, तो ये तकरीबन एक जैसे। तकरीबन का मतलब है कि जब इतने 100 साल गुजरते हैं तो लैंग्वेज के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो आज से जो 100 साल पहले उर्दू लिखी जाती थी, वो आज वाली उर्दू नहीं है, हम उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो इसी तरह की जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो तब्दीली थी। लेकिन जब हमने ये देखा कि जब हम गए उसकी यर्मिया की किताब के ऊपर, तो यर्मिया की किताब जो थी वो सेप्टुएजेंट जो थी उसके अंदर जो है उसकी तरतीब जो है वो काफी फर्क है। हमारे पास जो तरतीब है वो फर्क है, लेकिन जो सेप्टुएजेंट के अंदर जो फर्क है, और उसके बाद जो है
कुछ और भी जो है वो टेक्स्ट उसके अंदर फर्क लिखा हुआ है. सो आई हैव अ क्वेश्चन. व्हेन वी टॉक अबाउट that in Jeremiah there is some changes in Septuagint. So what kind of changes are those? All right, well, I want to complicate things before I answer that question. Okay. Okay. So in the Dead Sea Scrolls, we found manuscripts, and I showed you a picture of one that agree with the Masoretic text. But we also found manuscripts that agree with the Septuagint text. Now, yes, this is in Greek, but when they translated it back into Hebrew, they found scrolls at Dead Sea Scrolls that agreed with the Septuagint text. So now all of a sudden we're going, so the Septuagint differences, sometimes it's just because of translating the Greek, but they were actually looking at a different Hebrew manuscript, which was preserved. The Dead Sea Scrolls preserved some of those. So they might have two versions of Jeremiah in the Dead Sea Scrolls, the Septuagint version and the Masoretic version. तो अब ये है कि जैसे कि जो सेप्टुएजेंट है उसको हम देखते हैं कि जो अब्रानी की जितनी भी जो बाइबल थी, अब्रानी की बाइबल जो थी उसको जो है वो ग्रीक के अंदर उसका तर्जुमा किया गया. इसके अलावा जब हम इन दोनों को, मैसोरेटिक को, सेप्टुएजेंट को देखते हैं तो ये आपस में एक जैसे हैं. इसके अलावा जब हम मसीह से 1000 साल बाद का मैसोरेटिक टेक्स्ट देखते हैं और जब 1947 के अंदर जो है हमें अब्रानी के, इशाया का और मुख्तलिफ सहीफे मिले तो हम उनको जब कंपेयर करते हैं तो वो सब के सब जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं. जो मुख्तलिफ जो है थोड़ा सा वो क्या है, एक तो वक्त के साथ साथ जो जुबान के अंदर तब्दीली आई तो जब तर्जुमा किया गया और यहाँ जब उसको कॉपी किया गया तो थोड़ा बहुत जो था उसके अंदर तब्दीली थी. Okay, so I want to emphasize the Septuagint and the Masoretic text 90% of the time are exactly the same, but in a few places they are different. For example, the Septuagint in the book of Jeremiah is arranged differently. The chapters are in a different order, and it's a little shorter than the Masoretic version of Jeremiah. और अब देखें कि जो मैसोरेटिक टेक्स्ट और सेप्टुएजेंट है वो तकरीबन 90% हमेशा एक जैसी होती है. तब्दीलियां जो आपको बताई हैं वो लैंग्वेज की वजह से थी, लेकिन क्योंकि ये जब एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा किया जाता है तो हमेशा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता. तो कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं. तीसरी जो बात है वो ये है कि जब हम इसको जब हम देखते हैं कि यर्मिया की किताब, तो यर्मिया की किताब के अंदर ये तब्दीली है कि उनके जो तरतीब है, जो अबवाब की तरतीब है वो फर्क है. और दूसरा जो है वो सेप्टुएजेंट के अंदर जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो मिस है. All right, I'm going to stop sharing and talk to you guys for a second. Remember that in the book of Jeremiah, it actually tells us that the book went through several editions. The first book of Jeremiah that Baruch, Jeremiah's friend and scribe, wrote, he gave it to the king, remember? And the king cut it with a knife and burned it in the fireplace. Do you remember this? और आपने जब यर्मिया की कभी किताब पढ़ी हो तो उसके अंदर आप देखा होगा कि यर्मिया का जो दोस्त था, उस जिसका नाम बारूक है, उसने जब किताब उस बादशाह को दी तो बादशाह ने उसको जो है अपने चाकू से काट दिया और उसको आग लगा दी. तो इसका मतलब है जो पहला वर्जन लिखा गया था वो जाया हो गया. So Jeremiah had to go back and he sat down with Baruch, his friend and scribe, and they made a second copy. They made a second edition of the book of Jeremiah. और उसके बाद क्या हुआ कि जो यर्मिया था, क्योंकि यर्मिया का जो लिखने वाला जो था वो स्क्राइब्स जो था वो बारूक था, तो वो दोबारा बैठे तो उन्होंने दोबारा उस तमाम चीज को लिखा. Then
This is all right around the fall of Jerusalem. Jerusalem is falling in 587, and it's right around this when all this is occurring. Jeremiah and Baruch get kidnapped. It tells us this in the book of Jeremiah. They get kidnapped and hauled off to Egypt. और इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ये वो दौर था जो कि 586 का दौर था, जब जो है यरूशलेम जो है वो गिराया जा रहा था और नबूकदनेस्सर जो है उसके ऊपर उसको खत्म करने को था। तो उसी दौर के अंदर जो है जो यर्मिया को जो है वो किडनैप किया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्र से मिला। And while they're in Egypt, Baruch does another edition of the book of Jeremiah. और जब वो जो था मिस्र में था तो उस वक्त जो बरूक है उसने दोबारा जो कुछ उसने पहला लिखा था उसको लिखना शुरू किया। और अब ये देखें बरूक जो है वो अकेला ये सारा लिख रहा है। And what you discover, if you compare the Septuagint version of Jeremiah with the Masoretic version of Jeremiah, is that probably the Septuagint version of Jeremiah is the one that Baruch wrote when they were back in Jerusalem. And then the Masoretic version is the one that he wrote when they were in Egypt. Because what he does is he rearranges the material and then he adds a bunch of historical stuff. This was going on at that time when Jeremiah gave this word. This was going on when Jeremiah gave that word. And he writes that all down. And that's why Jeremiah in the Masoretic text is different. It's got the same material, but it's got additional material, giving you historical context for the words. And so the short version, the one he wrote in Jerusalem, is probably the one in the Septuagint. And the expanded one that's in the Masoretic text is the one that he wrote when Jeremiah and Baruch were kidnapped down to Egypt. तो एक जब उसने लिखा जो यरूशलेम के अंदर, ठीक है, वो शॉर्ट वर्जन है, तो शायद उस वर्जन को जो है वो सबट्यूजेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब वो अगवा हो के मिस्र के इलाके में गए तो मिस्र के इलाके के अंदर उन्होंने दोबारा लिखा और उसके अंदर जो है कुछ तारीखी वाकयात को और ऐड किया। और वजह ये थी कि वो दोबारा जो नए वाकयात हुए थे उनको उन्होंने इसके अंदर लिखा। तो ये इस वजह से जो है वो जो मैसोरेटिक टेक्स्ट है वो थोड़ा सा लंबा है और जो सेप्टुएजिंट का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा है। छोटा होने की वजह ये है कि जब वो किडनैप होने से पहले का है और दूसरा जो है वो किडनैप होने के बाद का है। आप सबको समझ आ रही है बात की? तो हाथ हिला के बताइएगा। I'm just asking, do you guys understand? Okay, so the interesting thing about the Dead Sea Scrolls is that they have old manuscripts in both traditions, in the tradition of the Septuagint and of the Masoretic text. तो That's what we find in the Dead Sea Scrolls. तो हम ये देखते हैं कि जब डेड सी स्क्रॉल्स मिले तो उसके अंदर जो है ये दोनों जो वर्जन है जो वो वहां पर मिले। So you just said, I think I just a little bit miss, when they found in the Dead Sea Scrolls, so they found the both version, right? Right. Okay. But they're written in Hebrew. Remember, the Septuagint's in Greek, but they found Hebrew texts that read like the Greek translation. तो So it's like, yeah. जब वो थे डेड सी स्क्रॉल मिले तो उसके अंदर एक तो सेप्टुएजिंट मिली, उसके बाद वो टेक्स्ट मिला जो शॉर्टर है जो कि अब्रानी के अंदर लिखा हुआ था। सेप्टुएजिंट जो है वो ग्रीक का तर्जुमा है, एक तो वो पूरी की पूरी मिली। इसके बाद जो है वो अब्रानी का एक स्क्रॉल मिला जो यर्मिया का, जो छोटा है, जो कि सेप्टुएजिंट को सपोर्ट करता है, और एक लंबे वाला भी मिला जो कि जो है मैसोरेट्स को सपोर्ट करता है। So I just want to make sure that they are going to be ready for that exam. So these questions right here, Dead Sea Scrolls is the confirmed
the accuracy of the Masoretic text of the Old Testament, because we found those scrolls that read just like the Masoretic text. और ये The जो Septu- है आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आएगा, और ये डेड सी स्क्रॉल्स जो है ये मैसोरेटिक टेक्स्ट को जो है वो कंफर्म करते हैं. And the Septuagint is the Greek translation. That's the और Septuagint. और सेप्टुएजिंट जो है वो पुराने अहदनामे की यूनानी तर्जुमा है, The Vulgate is the Latin version. और जो वॉलगेट है वो जेरूम ने किया, सेंट जेरूम में, और उसने लातीनी में किया. And Wycliffe is the last name. I think his name was John Wycliffe. He Yeah. made the first translation of the Bible into English. और जो विक्लिफ है, जिसका नाम पूरा जॉन विक्लिफ था, उसने इंग्लिश के अंदर इसका तर्जुमा किया. डू यू नो व्हेन ही डिड इट? Like 1500. No, Okay. he was before King James. So yeah, about 1500, I think. और ये आज से जो इंग्लिश में तर्जुमा किया गया, ये तकरीबन आज से 700 साल पहले इसको इंग्लिश में तर्जुमा किया गया. Okay, we've actually gone long.